Okay, so once again, thank you so much. This roundtable is about the third work stream, which is how to adapt global healthcare learning in Pakistan. So the approach we have it here. The first step was, in fact, we conducted assessment and the interviews with more than 60 patients, some like few months back, and then we had a conference on Health Tech Summit in Karachi. That was on 7th of March, where Dr. Tazeen and Yava were there as well, and few other senior leaders were there. So after that conference, we actually are conducting the roundtables. So these roundtable are extended version of the panels. Yeah. So this input together with the summit input will is going to be with the team who is working on a white paper kind of thing. So that white paper will be a document which include like what are the things which industry need to take as an action and what are things which policymakers need to take as an action. So that will be circulated to more than 700 healthcare and technology healthcare related technology companies in Pakistan. So that is something जो कि हम 2 months तक इसको launch करने जा रहे हैं. So this is the whole idea. So अभी की जो discussion है उसमें भी हम उसी step को जो कि specifically global learning के ऊपर है will take it forward. So I would request everybody to have a quick intro and then I will give a summary what was discussed in the panel last time, and then we can take it forward from there onward. So starting from the first person who joined, Minhal, I think let's go from that. Hi, thank you. Thank you so much, Ali. So my name is Minhal Suleiman. I have been working with Oracle for almost 4 years now, and I look after the healthcare sector across Pakistan. So this is what the technology, I've seen a lot of changes which are happening, and Oracle is contributing towards the healthcare. I will be sharing more experiences after the introduction is done. Thank you. Yes, Dr. Tazeen. Thank you, Ali. Thank you for having us here today. My name is Tazeen Rizvi, and I'm a clinician by profession. But for the last 15 years, I've been working in the digital space. Currently, I'm a director of a software company called Evan Solutions, and I'm also give advisory and consultancy to different clients on how best to use the latest technology trends and innovations to improve the clinical delivery outcomes and treatment outcomes. Thank you so much, Dr. Zeen. Yavar, over to you. Yeah, can you hear me now? Yep, we can. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for having us here today. I am working with Siemens Healthcare for the last 17 years, and currently my role is business partner management for Pakistan and Afghanistan. So what we basically do is we evaluate different companies to give them authorization to sell and promote Siemens equipment in different areas of Pakistan and Afghanistan. And this is currently my core job, along with this business strategy and development for Siemens Healthcare Pakistan and Afghanistan. Great. And once again, thank you to Yavar and Dr. Tazeen, because in our next project, which is smart hospital project, so we're getting a lot of session support from Dr. Tazeen and Yavar as well. So looking forward to deliver it in a better way, inshallah, in a soonest time. Okay, inshallah. So I will just quickly summarize. Dr. Tazeen, you were in the panel as well, right? In that panel. So I will quickly, yeah. So my team, we have watched the panel video and summarized some of the points, and then we will take it forward from there onward. So one of the point was like Pakistan lacks the data, which was like about to show it to the global clients. We were not able to build that scenario properly. There was pre-COVID a lot of resistance from the doctors when it comes to technology. Gap can be filled through telemedicine. And power of notification, there was a lot of conversation on that. Everybody has a device. So we, as a technology leaders and the company should think of how to make that useful. Similarly, the whole healthcare community should be connected in a way that they see kind of Netflix solution. So I think I would like to know more about what is that mean. Sure. And power of apps. There's a lot of
infrastructure is there, so power of apps we should focus on more. Um, and technology should more focus on user-friendly apps like Food Panda. The convenience should be there when it comes to the apps, when it comes to technology. Then students should be focused a lot. The new doctors who just like embarked into their True. practical life, and the students, the next generation for the doctors, they should be focused more and educated more. And by the way, this was also discussed in our morning panel when it comes to telemedicine, and people really talked about that there should be a course. In fact, Of with Dr. course. Tazeen, we talked last time as well. Yeah, That there it should be a be course in med school, definitely. yeah. So that they're inclined towards that. Empower end user, strict guidelines on data sharing and patient confidentiality, and tech should focus more on those kind of technology solutions which will focus like people feel good about it, user friendly and all that stuff. So this was the summary what we discussed in the panel. Now today the idea is again expanded it further. What are the global learnings, healthcare learning, which at the moment our infrastructure is ready, our doctors are ready, our patient is ready. Let's assume that. So we want to discuss that based on all that. What are the possibilities? What are the global learnings which are quickly can be implemented in Pakistan now, or mid time and then long term? So Sure. starting from Dr. Tazeen, because you were part of the panelists, so shed some light on Netflix, power of notification, and then we will Sure. take it further. All right, thank you, Ali. So I guess I'll just expand on what I was saying in the panel as well. The thing is that Pakistan made technology advancement or telecommunication sector has made immense, बहुत ज़्यादा तरक्की की है, and the penetration of mobile users, cellular users, and internet has really doubled over the last 3 years. And something that we also discussed, and that was actually आपके सारे पैनल डिस्कशंस में एक बात रही कि COVID actually just propelled all of us into this environment where we weren't able to see a doctor physically, and that was across the globe. Now, how different countries adapted to that model was different. So if I take an example of developed countries where you have 5G internet, everybody has a phone connection, and everybody has digital literacy to navigate these apps and also have these digital wearables. उन्होंने तो they were already telemedicine platforms थे, उन्होंने उन पे register कराया doctors. There are a few companies, मैंने जब आपसे बात की थी, there's Babylon, there's Push Doctor, there's Teladoc. These are a couple of companies that really their business boomed in the last 3 years because their telemedicine was ripe, ready for uptake, और यहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट था. अगर हम इसको पाकिस्तान में लेके जाएं टेलीमेडिसिन को, तो जो एक बहुत चीज हम देखते हैं अगर टेलीमेडिसिन की बात करें, आपको एक 20 मिनट वीडियो कंसल्टेशन करने के लिए बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए उस इंटरनेट कनेक्शन में कि वो एक कंसल्टेशन पूरी तरह से हो पाए. आई थिंक पाकिस्तान में कुछ बेहतर है बाकी डेवलपिंग कंट्री से, बिकॉज ओवर द लास्ट 3 years मैंने अफ्रीका में बहुत काम किया है, गाना, सूडान, सियरा लियोन, नाइजीरिया, जहाँ पे 2G इंटरनेट होता है, तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ वर्चुअल कंसल्टेशन ऑफ एनी काइंड ओवर देयर. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में अब I mean, when I go back, when I think everybody has not a smartphone, but everybody has a phone with a front camera, which we say is the minimum requirement of a teleconsultation. आपके लोग फेसबुक, टिकटॉक यूज करते हैं, तो इतना तो बैंडविड्थ आपके पास है ना कि आप 10 मिनट की वीडियो कंसल्टेशन तो डॉक्टर्स के साथ कर सकते हैं. सो आई थिंक फाउंडेशन काफी पाकिस्तान में कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज आई वुड से बेहतर है. But then we come to why is there a lack of adoption, जिसमें आपने मुझसे बात की, जब आपने सर्वे किया लोगों का, तो आपको डॉक्टर से रेजिस्टेंस क्यों आई? डॉक्टर से रेजिस्टेंस इसलिए आई कि हमारी डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं है. हमारे पास जो आजकल और जो इतनी डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं, a lot of these telehealth solutions are very complicated to navigate. Even when I work on clinical decision support systems with my clients, when I'm working on Cerner, Dr. Kronos, ये clinical templates आसान नहीं होती. I mean, somebody like me जो 15 साल से करी ये काम रहा है, I can say हाँ ये तो बहुत आसान है, लेकिन for a person who's been writing on a pad and
tearing a paper and giving it to the patient वो बहुत आसान है. तो डिजिटल जो रेजिस्टेंस आप देखते हैं ना, वो डॉक्टर्स की वजह है, because we are giving them platforms which they didn't develop. Nobody asked them how you need to have your platform develop. हम कहीं से प्लेटफॉर्म खरीद के कहते हैं ये हॉस्पिटल ने कहा है दिस इज द EMR वी वांट टू इम्प्लीमेंट, भाई आप इसको यूज करें. इट डजंट वर्क दैट वे. क्लिनिकल अडॉप्शन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कोई सिस्टम कहीं का कहीं नहीं चल सकता. सो आपको एक तो प्लेटफॉर्म्स बनाने में, मोबाइल एप्स बनाने में, टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स बनाने में आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बड़े इनिशियल स्टेजेस पे डिस्कशंस करने की जरूरत है. आपको एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म से चाहिए क्या, व्हाट इज योर ट्रू आउटकम. वंस यू आइडेंटिफाई द ट्रू आउटकम, फिर आप उसको इस तरह डेवलप करें कि यूजर फ्रेंडली तरीके से, ऑफ कोर्स, कि वो उस तक पहुंच सकें. हम क्या करते हैं, हमने एंड गोल आ गया कि डिजिटल डेटा होना चाहिए. वी नीड डेटा ऑफ द पेशेंट टू मेक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स. और अब हम इस तरह इतने मुश्किल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन्स के थ्रू, इतने ज्यादा टचेस के थ्रू, doctors are not digitally literate enough and do not have the exposure of navigating these EMR systems compared to the developing countries. अब यहाँ पे NHS हो गया, Cerner हो गया, ये 20 साल से EMRs लिख रहे हैं. Obviously EMRs evolve हो गए, लेकिन एक टाइपिंग की भी आदत है, ठीक है, थोड़ा सा नेविगेशन की भी आदत है, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी भी है. तो अडॉप्शन तब बढ़ेगी जब आप प्रॉपरली डॉक्टर्स को टूल्स देंगे, जरिए देंगे कि वो सीख सकें. इसीलिए जब मैंने आपसे बात की थी, और अभी इनफैक्ट आपकी बात के बाद ही मैं क्लाइंट से बात करी थी, तो NHS ने अभी डिजिटल टूल्स और डिजिटल कोर्स निकाला है मेड स्कूल्स के लिए. और पूरे NHS के जो फ्रंटलाइन स्टाफ हैं, अब वो डिजिटल, उन पे मैंडेटरी हो गया वो कोर्स करना. इस तरह की चीजें अगर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, या जैसे अब ये सिस्को में मिनहाल हैं और ये यावर हैं, अगर ये अपनी कैपेसिटी में स्टेक होल्डर से कहें कि आप अपने लेवल पे लोगों को बेसिक लिटरेसी डिजिटल, फिर डिजिटल हेल्थ लिटरेसी के जी EMR और नेविगेशन कैसे हो सकती हैं. सो आई थिंक दैट विल रिड्यूस the adoption resistance we see in doctors. दूसरी बात, अली, आपने ये कहा कि हमारे डॉक्टर्स आर overburdened. हमारे पास there is one doctor to 20,000 there is one doctor to 20,000 patients. तो आप देखें कि रेशियो वहां पे कितना है. एक डॉक्टर एक घंटे में, हम OPD में जब बैठा करते थे, हम एक घंटे में 50 देखते थे. पर्चियों पे लिख के आसान होता है. To navigate this at this much speed on a virtual platform is difficult, but we can take small steps. और जैसे आपने कहा कि the entire world is moving towards collaboration. किसी एक बंदे का ये काम नहीं रहा. It's a collaborative effort. We all have to chip in. कुछ चीज मैं कर दूं, कुछ मिनाल कर दें, कुछ आप कर दें, कुछ आवर कर दें. It's actually a collaborative effort. तभी एक narrative shift होगा. And that's where I also with Zevin Solutions, जब मेरे पास clients आते हैं, तो rather than saying कि जी सर्नर दुनिया का और बैबिलॉन दुनिया का बेस्ट टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है, आप वो उठाएं और लगा लें, नहीं. आई ऑलवेज से आप किधर हैं, आपकी टारगेट मार्केट किधर है, आपका अस्पताल कितना एडवांस है, आप क्या चाहते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम अ फर्म बिलीवर टू कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी टू द कस्टमर्स नीड. हर चीज हर जगह नहीं चल सकती. So the one idea you say like the global learning के लिहाज से आप बात कर रही हैं कि जो पाकिस्तान में अडॉप्ट हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि लाइक टेलीमेडिसिन इज वन ऑफ द आइडिया बिकॉज वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू अदर्स. या सो टेलीमेडिसिन की अडॉप्शन शुड बी फास्टर एज ए ग्लोबल लर्निंग. सो मूविंग टुवर्ड्स मिनहाल, सो व्हाट डू यू थिंक द अदर ग्लोबल लर्निंग्स जो कि अभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से? In fact, very interesting. What I've seen, especially during COVID, जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है हेल्थ केयर ने, and I completely understand what Dr. Tazeen also mentioned. I have seen there's a shift. There is a major shift which is coming up. As far as Oracle is concerned, first of all, Oracle acquired Cerner. So Cerner is now part of Oracle now. Also, what we have done is that our largest consumer of technology for HMIS application, आपको ही पता होगा यदि, it's a backbone application for any medical institute. It's hospital management administration system. You can call it EMR as well. So that EMR
has its own challenges. You cannot implement one EMR in all the hospitals. For example, if I quote Shaukat Khanam Hospital, now they specialize in cancer, but they have implemented their application in number of hospitals. Now those hospitals, some are specializing in the cardiac, some are specializing in kidneys. So this is what the diversion was, and they had to, like doctor said, they have to do the customizations. One solution does not fit for all. But उस solution को technology किस तरह support करती है? That is where we come in. We came. I'll just share an interesting use case. This is Shifa International Hospital. Shifa International Hospital came up during the COVID. There was a lockdown. Even the beds were filling up. They could not accommodate even the regular patients. So they came up with a home health service mobile application completely on Oracle. So that application allowed them to reach out, take the hospital, in fact, in short, to the patient. Even the dialysis, all kind of, these operations which could be managed at home. So that application you used to get, all kind of consultancies online, you pay online, and you get the services online. So that is which the major breakthrough for healthcare and technology was, and it's still expanding. Similarly, we are working with a very renowned hospital on early cancer detection. What we have seen is there's a lot of data. Any hospital you pick, all they have is data, but their data is not useful unless you drive information from it. So we selected a use case for early breast cancer detection. So there was a data on machine learning along with a partner. So we have a tool in which last 5 years of MRIs will be scanned, and based on the patterns, the machine will be able to learn and in fact, navigate that this patient is having such and such symptoms, and within 3 to 4 years, it can develop into cancer. So this is a very interesting use case also, which we are working, and this is totally based on AI and machine learning. So your perspective, yeah. So your perspective is like adoption to AI and machine learning should be faster in Pakistan. This is like you're taking, because the idea is what are the global learnings which should be implemented in Pakistan. So that is the question I'm actually looking This forward to is have. what is happening. In fact, machine learning and AI, this is what is happening globally. NLP, this is happening globally. NLP, yeah. But for Pakistan, it will be taking some time. We cannot push it because already technology absorption needs a lot of time. मैं अगर कहूँ कि जी नहीं आप चीजें 2-3 महीने में करके दें, that will not make sense. This will take its own time. At least अगर मैं आपसे डिटेक्शन की भी बात कर रही हूँ, तो सिर्फ मशीन लर्निंग को ही 6 से 8 माह लगने हैं. But yes, the positive sign is कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप शुरू हो गई है. जहाँ एक रिलक्टेंस होती थी 1-2 साल पहले इस चीज पे बात ही नहीं करनी, कोविड हैज ड्रॉप्ड दैट बैरियर. वो बैरियर अब गिर चुका है और अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ बातें स्टार्ट हो गई है. एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, वेरी सबसे बड़ी बात जो मशीन लर्निंग की हम यहाँ से ले सकते हैं ना अली, आई बिल्ड अप टू मिनहाल्स पॉइंट, इज एआई विदाउट गाइडलाइंस एंड गार्ड रेल्स ना काफी खतरनाक भी हो सकता है. एआई इज एज गुड एज द पर्सन हु फीड्स इट. तो जब एआई की हम बात करते हैं, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल ब्रेन वो सीखेगा जो आप सिखाएंगे. तो एआई को बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे एथिकल गाइडलाइंस बन रही हैं, गार्ड रेल्स बन रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, उनको देखा जाए, उन्हें कस्टमाइज किया जाए ताकि हम डेटा इस्तेमाल करना सीखें और फिर हम मशीन लर्निंग की तरफ जाएं. और it's great that the conversations have started, but strategy और guidelines बहुत जरूरी हैं जब हम machine learning की बात करते हैं. Great. So Yavar, like having your perspective, what are the global learnings when it comes to devices? Because आप लोग devices में इन चीजों में बहुत ज्यादा देखते हैं, and AI definitely आपका एक focus area. How do you think, what are the quickest learnings which can be implemented in Pakistan? Just to give a brief background to Dr. Tazeen and Minhal from Oracle, I mean, Siemens is basically manufacturing all the radiological equipments that are being installed in imaging departments of the hospital, and then obviously we maintain those equipment as well. So we are in contact or continuous contact with the end users and the technicians and the doctors who are working on those equipment and producing reports to be provided to the patients for further treatments.
I just want to go back to 2 points. Number one, Dr. Tazeen 100% agreed. She said or talked about the resistance and the training. If you remember yesterday or day before yesterday when we were doing this learning session, I absolutely noted the same thing कि इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगेन मैं इसको अगर इक्विपमेंट रेलिवेंट एग्जांपल में भी कोट करूंगा ना, just to give you an example, we see doctors in the field who are working on a specific brand since more than 10 years maybe, and when we give them a different machine, although I mean it is the same thing, I'm giving them ultrasound machine, only the brand is different and the buttons and the keys of the machine are at different places, they are even reluctant to work on that machine because उनकी एक आदत है, उनको पता है कि मुझे ये बटन दबाना है, ये रिपोर्ट आएगी, मुझे यहाँ से ये चीज निकल के देनी है, वगैरह वगैरह. तो दे हैव देयर ओन रीजंस एंड इन दिस रिगार्ड्स 100% अग्री डॉक्टर तजीम जो वो कह रही हैं कि इन लोगों की रेजिस्टेंस हमेशा आएगी, और इन दिस रिगार्ड्स आपको उनको एजुकेट और लिटरेट करने के साथ साथ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है. और अगेन इट गोज बोथ वेज, जिसमें ऑब्वियसली उनकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए. और जो प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, अभी डिलॉइट की एक रिपोर्ट है यूके से जिसमें वो बता रहे हैं कि सिर्फ 2020 के अंदर 90,000 डिजिटल मेडिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके ये जो स्टोर्स होते हैं एप्पल के या एंड्रॉइड के, उसके ऊपर ऐड हुए हैं. इन अदर वर्ड्स व्हाट दे आर सेइंग इज 250 एप्लीकेशंस एवरी डे आपके जो स्टोर्स हैं उसके ऊपर ऐड हो रही हैं. तो पॉइंट वही है कि ये चीजें डेफिनेटली आ रही हैं. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एआई के ऊपर बात कर रही थी मिनहाल, वो मैंने आपको अगेन एग्जांपल दिया था यस्टरडे, स्पेशली विद दिस रेफरेंस विमेन हेल्थ के अंदर, जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे वर्क स्टेशंस और रिमोट आपके जो रिपोर्टिंग वर्क स्टेशंस हैं वो आ चुके हैं जो इजीली 8 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगेन ये बहुत जरूरी है कि मतलब जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही यूजेज के बारे में बात की जाए, उसकी एजुकेशन दी जाए. बट अगेन ग्लोबली जो आप बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द की. ग्लोबली यूरोप में, यूएस में, हर जगह पे इसके ऊपर काम हो रहा है, और वही चीजें क्योंकि हमारे प्रिंसिपल कंपनी सारी वहाँ पे मौजूद हैं, तो इन द शेप ऑफ डिफरेंट लिटरेचर एंड इन द शेप ऑफ इक्विपमेंट वो चीजें यहाँ पे आ रही हैं. और विमेन हेल्थ के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर इज द परफेक्ट एग्जांपल, जिसके अंदर आपको किसी ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है. आपकी मशीन एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद आपका जो वर्क स्टेशन है वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है, विच इज 80% करेक्ट. ओनली इन 20% केसेस यू नीड फिजिकली अ डॉक्टर टू रिपोर्ट, बिकॉज वो कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस होते होंगे. अगेन जो दूसरी बात है कस्टमाइजेशन के बारे में, डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हमें यही नहीं अंदाजा होगा कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारी क्या मार्केट है, हमारी क्या ऑडियंस है. पाकिस्तान इज आई मीन आपको बुरा लगता है या जो भी, हम सब पाकिस्तानी हैं, जारी बात है, लेकिन पाकिस्तान पीछे है और इस फैक्ट को हमें मानना पड़ेगा. इवन आपको पता है जो रिपोर्ट्स आपको बता रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग अगर सिर्फ आप क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर में देखें तो इट स्टैंड्स एट 154th रैंक आउट ऑफ 195 कंट्रीज. सिमिलरली इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन स्केल के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो उसके ऊपर इसकी रैंकिंग अभी नीचे आई है और अब पाकिस्तान 107th पोजीशन पे आया है. तो कंसिडरिंग ऑल दिस आपके पास चैलेंजेस दूसरे किस्म के हैं. ग्लोबल ट्रेंड कुछ और चल रहा है, हम लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जब तक एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी हम नहीं समझेंगे, सारी बात घूम फिर के बजट पे आ जाती है. आपको पता है कि हेल्थ केयर के अंदर पाकिस्तान में कितना बजट है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है. तो अगेन एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ. आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हेल्थ केयर का सारा सेटअप है वो डील होता है प्राइवेट और पब्लिक के अंदर, ठीक है. तो व्हाट हैपन और व्हाट इज हैपनिंग इज कि 30% आपका जो है पॉपुलेशन, दैट इज बीइंग ओनली 30% इज बीइंग डेल्ट विद द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, एंड 70% आपके जो हॉस्पिटल्स वो पॉपुलेशन है वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैटर कर रहे हैं, जो कि ओवरबर्डन है. बट अगेन Of वो course. प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होने की वजह से हो क्या रहा है कि उनकी लिमिटेशंस डिफरेंट हैं. पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरह बजट वगैरह का इशू भी नहीं है, तो वो ज्यादा बेहतर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और उन्होंने इस तरह की चीजें ऑलरेडी लगाना शुरू कर दी हैं.
मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में, इसी तरीके से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, या इवन hospitals are providing home services. They are even now taking mobile X-rays and ultrasound to the houses ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल पे नहीं आना पड़े. तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पब्लिक सेक्टर में बहुत ही डिफरेंट दुनिया चल रही है और प्राइवेट सेक्टर में बहुत डिफरेंट दुनिया चल रही है. तो आप ऑन द होल एक स्केल के ऊपर पूरे पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो वो मतलब ये टोटल इम्बैलेंस है, टोटल इम्बैलेंस. अभी आपको पता है डॉक्टर जी सॉरी नहीं, आप बोलिए. डॉक्टर फैसल का मैं बता रहा था आपको. डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सडनली एक वो सरप्राइज विजिट किया. आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल जो है वहां पे. अगेन माय पॉइंट इज कि ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. अगर आप देखें ज्यादातर उनका जो फोकस है, अगेन दिस इज एन एविडेंस एंड सपोर्टिंग आर्गुमेंट जो मैंने आपको दिया कि पब्लिक सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है. अदरवाइज वो क्यों हर जगह पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. अभी रेलवे के सारे जो टेंडर्स आ रहे हैं, फौजी फाउंडेशन के सारे टेंडर्स आ रहे हैं, सुई गैस, वापडा, सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं. ठीक है, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर आपको ये डायरेक्शन नजर आ रही है, आप प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट दुनिया में भी हो रहा होगा, सब ठीक है. बट अगेन इन दैट केस टू यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट पार्टी एज वेल. आप जब उस टेंडर डॉक्यूमेंट को उठा के देखेंगे और उसके जो क्लॉजेस पढ़ेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टेंडर जो आपके प्राइवेट पार्टीज हैं वो उसमें बिड करने को रेडी नहीं है. इतनी अनरियलिस्टिक किस्म की क्लॉजेस उसमें मौजूद होती हैं. तो आई एम श्योर डॉक्टर तजीम को इसके बारे में पता होगा, बीइंग अ डॉक्टर एंड इन्वॉल्वड इन दिस फील्ड. मिनहल के बारे में आई एम नॉट श्योर, हाँ जी. बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है. तो बट अगेन हाँ, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मी इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. अब इसको आप जितना ब्रॉड करना चाहें कर सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर हाइपर कनेक्टिंग की बात करें, चाहे आप इसके अंदर इंटेलिजेंस की बात करें, या आप आई मीन ऑटोमेशन सेंसर्स की बात करें, सस्टेनेबल मॉडल्स की बात करें, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. एक और चीज अली, एक और चीज जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की, एक तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की तो बहुत बड़ा डिवाइड है, जो एक हम सीख सकते हैं ग्लोबल से, जो हमने 3 साल में सीखा कि जब इतनी, जैसे यावर भी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, देयर आर अस्टाउंडिंग दैट डिजिटल अपटेक से हुआ क्या. ऑब्वियसली एक portion of population got help, they had the means, they had the money to adopt to these innovations far quickly than the other. जो एक चीज अब वेस्ट ने की और अब वो पीछे मुड़ के कह रहे हैं कि ये तो 3 साल में डिजिटल डिवाइड इतना बढ़ गया है कि जो हेल्थ एक्विटी है उसका तो इतना, यानी अगर आप देखें सारी क्लिनिकल रिसर्च जो अमेरिका में हुई है, एस्ट्राजेनेका और ये सारी बड़ी कंपनीज, फाइजर, इन्होंने एक ही एथनिसिटी के लोग ले लिए. आपने जेंडर बायसेस उसमें देखे, आपने एथिकल बायसेस उसमें देखे. अब इतना ज्यादा जो हम देख रहे हैं ना बाहर डेवलप कंट्रीज में, हम उससे लेसन लर्न कर सकते हैं कि जो उन्होंने गलती की जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड इतना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डिजिटल अडॉप्शन, वो हम ना करें. और वो सबसे बेहतर इसी तरह हो सकता है ऑब्वियसली कि आप कोलैबोरेशन करें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में. अच्छा, इसको थोड़ा सा फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जब डिजिटल डिवाइड की बात करें तो हम यही बात करें कि प्राइवेट जो पीपल हु कैन अफोर्ड, तो वो उसमें ज्यादा वो एडवांस टेक्नोलॉजीज पे, एआई पे, जो हॉस्पिटल्स जिस तरह आगाहान हॉस्पिटल या इस तरह बड़े हॉस्पिटल, उन तक उनकी अप्रोच है. जो जिनको लाइक दे नॉट टेक्नोलॉजी लिटरेट, दे आर नॉट वेल ऑफ, तो वो फिर पब्लिक हॉस्पिटल में जहाँ पे फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं. आर वी टॉकिंग अबाउट दिस एज ए डिजिटल डिवाइड, डॉक्टर तजीम? एक तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हो गया ना अली, जिसमें आपके कि आपकी पब्लिक सेक्टर और अस्पतालों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो एक एंड टू एंड टीएमआर लगाएं, या HL7 यावर जानते होंगे, HL7 डाइकॉम कंपैटिबल लेटेस्ट मशीन्स लगाएं कि आपका यहाँ पे टेस्ट हुआ और वहां पे रिपोर्ट आ गई, यहाँ पे CT हुआ और वहां पे 2 मिनट में डॉक्टर के पास टैबलेट में आ गया. एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है. ये मशीनें जितनी एडवांस्ड हैं, जितनी अमेजिंग है, उतनी ही महंगी हैं. ठीक है, जितनी आप एडवांस कर लें वो उतनी महंगी हो जाती है. ठीक है, तो आप बाइंग पावर देखें पब्लिक हॉस्पिटल की कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल, ये एक बहुत बड़ा फर्क है. ठीक है, ये तो आ गए आपके हेल्थ केयर
ड्राइवर्स जो अस्पताल हैं, फिर आप आए नॉर्मल पॉपुलेशन पे। नॉर्मल पॉपुलेशन में हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की अली, के जो डिजिटल टेक्नोलॉजी रखते हैं ज्यादा, वो ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो अपटेक है, जो एक नैरेटिव शिफ्ट है कि अब हेल्थ केयर हाइब्रिड मॉडल पे चलेगी। हम हर दफा जरूरी नहीं है प्राइमरी केयर के लिए, पेट दर्द के लिए, कान खराब होने के लिए, डायरिया के लिए, कोल्ड फ्लू के लिए, कि हम एक अस्पताल की ओपीडी में जाके खड़े हो जाएं। हम एक वर्चुअल ले सकते हैं। ये तब होगा जब आपकी सारी पॉपुलेशन के पास एक फोन होगा। ये डिजिटल डिवाइड है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, और जो 3-4 सालों में नैरेटिव शिफ्ट आया है कोविड से, बड़ा वाजे नजर आया है कि एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को इतनी हेल्थ केयर मिल रही है। आज मैं चाहूं तो 50 डॉक्टर्स से, आज 50 ऐप डाउनलोड करके 10,000 डॉक्टर से मेरे पास एक्सेसिबिलिटी है, उसके बरक्स किसी के पास फोन नहीं है। तो ये हमें देखना चाहिए। अगर आप लर्निंग की बात करें तो ग्लोबल लर्निंग से हम ये सीख सकते हैं कि हम इसको माइंडफुल रहें कि डिजिटल अडॉप्शन डिजिटल डिवाइड बढ़ाता है। Great. So we got other team members as well. We have Dr. Anmol Zahra. Thank you so much, Dr. Anmol, for joining us. And we have Mariam as well. So we would like to know your opinion on this question. What are the global learning? अभी तक जो हमारी बात हुई उसमें हमने टेलीमेडिसिन की बात की है, हमने ट्रेनिंग्स की बात की है, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस पे ज्यादा बात की है, डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करने की बात की है। सो एनीथिंग एल्स जो कि आपको लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मरियम में भी, सो मरियम में भी कैन यू स्टार्ट इट एंड देन प्रोसीडिंग फर्दर एंड मोर कैन ऐड वैल्यू इन दैट। Ji, Assalamu alaikum, Ali. Assalamu alaikum, everyone. Pleasure to be here with you. Ali, I mean, I would just start off by saying that, you know, having your health guidelines, your national health guidelines updated according to your population specifics, right? That is like something that would bring an immense amount of change and positive change, right? Like, जब आपके पास guidelines ही नहीं बनी हुई है, like we're like, if I have to look for clinical decision making, I am searching the NHS website, or I'm looking at CDC like for latest recommendations, right? तो आपके standards नहीं है, population specific guidelines नहीं है. I think this is a very important step that policymakers need to understand and take very seriously. कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, like we're talking about AI, like, you know, it's beautiful, like the amount that of, like, you know, progress that you can achieve, but what will you base your AI on? You don't have that framework, you don't have the skeleton, you know, on which you built upon. Yeah, so I think, yeah. Right. So, and then the same, before we, you know, debate further on that, let's hear from Dr. Anmol Zahra. Please feel free to share your points as well. Oh yeah. So I think, yeah. So I think because of signal, so she disconnected with the call. No problem. So there you go, digital divide. Yeah, good. That's true. That's very true. That's true. Yeah. So Minhal, would you like to add something which Mariam just said? I think this is a very important point. We should a little bit more talk about the point. I think her point is absolutely spot on, but at the same time, we have to start from somewhere. Yes, as I said, that no data is useful unless you are, you know, getting the information out of it. And plus data sanitization. Azim rightly pointed out that, you know, you will be teaching the AI, and if the data is not sanitized, it will not be giving you the result. In fact, it can give you even more disaster results. I think that is where they are currently. It's mostly the discussion based. There is no framework, no policy, no regulatory authority which talks about technology or which restricts the technology, number one. Number two, we data centralization. There needs to be, like, we had a couple of discussions with the government officials that, for example, we have NADRA, like we're having our CNIC number should be used as the MR number.
Wherever one person is going, there needs to be a centralized record of that patient, whichever city, whichever place he needs to go. That integrity and centralization of data is really important. I think if we even start from one province, if we even start from city to city basis, it's a long-term thing. But if we have it, would be solving 99% of the issues which we are having. I would second that. Ali, when I talk about Nadra sitting outside, नादरा का सिस्टम ही को अगर स्टार्ट कर देना, बहुत अच्छी अनमोल ने मिनहाल ने बात की, and that's what, you know, I was discussing with a colleague a few days ago as well. We can use Nadra's data. They have centralized it. I mean, it's really remarkable. I sit in London and I go to the London office and they just put in my Nadra number. मेरे सारे बच्चों के नादरा के numbers आ जाते हैं, उनको ये पता होता है कि मेरे वालिद कहाँ थे. That's your base. Start with that. You have that in your system, and Nadra has done an amazing job in the last couple of years. Like for me to open, I mean, I applied for my son's NICOP. Okay, and then I'm going to talk about technology and where I think we have the foundation. I was in London. We were traveling to Pakistan in December. 10 days before we realized his Nadra is expired and he doesn't have a Pakistani passport. Oh, we were like panicking and we just, ab kya hoga, kaise jayenge, usko chhod ke nahi ja sakte. Can you believe it? Nadra has an app where I did the biometrics of my son on my phone sitting in London. I got his NICOP delivered to London 4 dinon mein. I was so impressed. उसने सिर्फ वो ऐप पे अपने सारी फिंगर्स डाली, उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने कहा ये वही बच्चा है, और मेरे एड्रेस पे 4 दिन में मेरे बच्चे का नाइकॉप था. That is the base. आपके पास ये सब मौजूद है. We should definitely take Nadra as our base point. जब डेटा की बात करते हैं आप उस पे बिल्ड करें, आप वो आपका एमआर नंबर अगर हो जाए तो आप उसको बिल्ड करें फिर. अब देखिए हमने सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग एवरीबॉडी साइड. हमने कॉन्फ्रेंस के अंदर इस टॉपिक को लिया, जिसको वो बल्कि नदीम जो ऑरेकल के यहाँ ही लेड दैट टॉपिक, कि हमने केस स्टडीज देखी जो ई पल्स की ऐप है इन टर्की के सेंट्रलाइज डेटा है. जब एक बंदे को हार्ट अटैक या कुछ इस तरह से हुआ है, उसके मोबाइल पे ऐप है, एनीबडी कैन क्लिक दैट ऐप एंड कैन गेट टू नो कि इसको पहले कब हुआ है, अच्छा इसको किस चीज से एलर्जीज है. सो वो बिफोर यू रीच टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट. दे नो कि ये मेडिसिन इसको सूट कर, इसकी हिस्ट्री क्या है, एंड दैट्स वेयर यू आर सेविंग लाइफ. तो होता क्या है, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रीटमेंट दोनों बढ़ जाती हैं. So patient data is something which should be centralized, और इसी के ऊपर हमने सेपरेट पूरा सेशन भी इसी वजह से किया. So यहाँ पे जो कंसेंसस बिल्ड हो रहा है टुवर्ड्स दैट टॉपिक एज वेल, कि हमें एक रिकमेंडेशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, we should bring it to the Nadra as well. So we should meet Nadra कि भाई आप ये बताएं कि पेशेंट डेटा जो है वो डेफिनेटली इन प्रोटेक्शन वे हम उसको करें, लेकिन ये ही एक स्टार्टिंग पॉइंट है. जिस तरह मिनहल ने कहा कि जो प्रोटोटाइप है दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम अ सिटी, जो आप कहें इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं से स्टार्ट करें विद अ मॉडल, और उसको फिर आप फर्दर उसको कर रहे हो. सो डेटा के ऊपर किसी और का इसमें यावर अब आपका कोई इनपुट है, बल्कि जो मरियम है वो तो हमारे मॉर्निंग वाले सेशन में भी कर रही थी, इसके ऊपर अगर आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है. मेरा आई मीन जो ये कंसर्न या कह लें कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट इस पे आ सकता है, आई एम अवेयर, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि सिर्फ जो रिसर्च और रिपोर्ट्स आपको बता रही हैं, पिछले कपल ऑफ इयर्स कह लें या 3 इयर्स के अंदर आपका जो डेटा है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 800% जो है वो बढ़ चुका है. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मेडिकल डेटा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, सो एक्चुअली मिनहल की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, ओरेकल, क्लाउड, डेटाबेस, जो भी रिजर्वायर होता होगा. बट माय पॉइंट इज कि नादरा का अपना कोई ना कोई लिमिटेशन डेफिनेटली होगा. आई 200% एग्री टू दिस कमेंट के नादरा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एंड डेफिनेटली हम उसको कोई सैंपल बना के किसी एरिया से, किसी सिटी से और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक रेफरेंस है. बट जब आप उसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स और सारा हिस्ट्री ऐड करना शुरू करेंगे तो उसका जो साइज या लिमिटेशन होगा उसको कैसे डील करना है, एंड देन फिर वहां पे कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं.
ये एक और बात डेटा, यहाँ से हमारे सवाल पास निकलता है। डेटा, जब डेटा जमा करते हैं ना, तो नादरा के पास डेटा है जो डेमोग्राफिक है, ठीक है। जब जी आप हाँ, क्लिनिकल डेटा की बात करते हैं, फिर आप एक सेंसिटिव इशू में चले जाते हैं। क्लिनिकल एग्जैक्टली। डेटा शेयर नहीं कर सकते आप। सो पूरी दुनिया में आपके बड़े स्ट्रिक्ट पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी लॉज हैं, जो कि ऐसा ही है। यानी ऑब्वियसली एप्लीकेबल होते हैं। मोस्टली ले लें, हिपा कहते हैं, हालांकि है वो यूएस का लॉ, मगर मोस्टली जब बात करते हैं हम हिपा की बात करते हैं, हालांकि यूके वाला, यूरोप वाले अपने अलग लेते हैं, पर वो एक ही बात करते हैं। मोरलेस बातें वो एक ही करते हैं, उनके नाम फर्क हैं डिफरेंट कंट्रीज में। अगर आप क्लिनिकल डेटा की बात करते हैं, तो डेफिनेटली यावर की बात ठीक है, आपका एज और जेंडर अलग चीज है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्या आपको पता नहीं 10 साल में क्या क्या बीमारियां हो चुकी, ऑब्वियसली उस क्लिनिकल डेटा इज सेंसिटिव। लेकिन देर आर, इफ वी फॉलो द गाइडलाइंस, इफ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर कंसेंसस कि जी ये डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी लॉज हैं, इस तरह शेयरिंग होगी, यहाँ ये स्टोर होगा। अब स्टोरेज पे भी बात करें, जो कि आई एम हेविली इन्वॉल्व नाउ हियर, इज आई एम वर्किंग अ लॉट इन ब्लॉकचेन। क्यों? क्योंकि हम ब्लॉकचेन की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चला, अगेन अनदर ग्लोबल लर्निंग पॉइंट अली, हमने बाहर के मुल्कों से सीखा कि जब सेंट्रलाइज डेटा होता है और जब हैकर उसको हैक करता है, तो आपका एक हैकर ने आपके सालों का डेटा उड़ा दिया। ये हमने उनसे सीखा, बिकॉज वो सेंट्रल डेटाबेसेस, क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस पे काम कर रहे थे। तब बाहर के लोगों ने सोचा ये तो गड़बड़ का काम है, राइट। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। सेंट्रलाइज डेटा इज एन अमेजिंग थिंग, हैविंग अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डेटा इज गोल्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स, बट वो उसकी एक रिस्क है, इसलिए अब हम ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। तो जो यावर बात करें, हम ये भी कर सकते हैं कि हम पीओसी करें, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करें, और हम नादरा से कुछ लेके कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की से कुछ बना लें, जिसपे कि थोड़ी हमें पेशेंट की, जो कहते हैं डेटा लीकेज और कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज इतने ना आए। दैट्स जस्ट अ थॉट। सो आई एम टेकिंग एज एन एक्शन कि हम इसको एक डिबेट हमें करनी चाहिए विद ओपन माइंड, कि जिसमें डेटा प्रोटेक्शन भी बैठा हो, जिसमें नादरा बैठा हो, जिसमें हेल्थ केयर बैठा हो। सो इसको हम पॉजिटिवली ब्रेनस्टॉर्म करें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है। सो इस तरह से, जिस तरह डेटा प्रोटेक्शन की और बड़ी बात आप कर रहे हैं, सो बल्कि इसमें तो हमें मिनरल डेटा प्रोटेक्शन के लिहाज से कुछ इनपुट दे सकती हैं कि क्या, लाइक जिस तरह हैकर्स वाला कॉन्सेप्ट, ये बड़ी बात हो रही है, इस पे हेल्थ का डेटा कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, अगर हम इसको सेंट्रलाइज डेटा के ऊपर बात करें तो। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब हमने क्लाउड पे काफी हॉस्पिटल्स को मूव किया, तो सबसे बड़ा कंसर्न था दैट इज क्लाउड सेफ। दिस वाज a concern. What we say is कि अगर आपका फाइनेंशियल डेटा लीक होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल हिट आती है, लेकिन मेडिकल डेटा contains your life on risk. And trust me, these concerns were addressed. The reason is, एक तो जितनी भी compliances है ना, be it HIPAA, CMMI, JCI accredited, ये सारी compliances meet होने का criteria यही है कि आप जो भी solution provide कर रहे हैं वो security measures को meet करता है। अगर वो meet नहीं करता, then obviously there's no point of moving to the other technology. Obviously काफी ज्यादा हिट्स वगैरह आती हैं, ransomware attacks आते हैं, लेकिन जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड। तो यस, ये टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा एडवांस किया और इन चीजों को बहुत प्रोटेक्ट किया, स्पेशली इन हेल्थ केयर सेक्टर। Okay, so yeah, so I think if we summarize all this stuff, so a lot of good points are here now from the global perspective. So we left with 14 more minutes. मैं suggest करूँगा, अगर starting from Dr. We have from Dr. Mariam के last input जो अभी तक हमारी बात नहीं है, if anything, आप जो ये वीडियो जा रही है, ये व्हाइट पेपर वाली टीम को जा रही है। सो एनी ग्लोबल लर्निंग जो आपको लगता है कि ये जरूर उसमें कंसिडर होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, प्लीज शेयर योर लास्ट पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड द कन्वर्सेशन। डॉक्टर मरियम, Dr. Mariam, you're on mute. Oh, can you hear me now?
Yep, we can. Can you hear me now? Yeah. So I think, like, your healthcare guideline standardization, your data centralization, there should be some basic data points which should be covered by every provider. And that is the way forward. Like, that is what will help you. And, just population health, research, and public health. These are three domains which will also flourish with, these different kind of policies and protocols. So yeah, that's basically what I would sum it up as. Great. Yavar, what are the things you think like global learning ke lihaz se should be part of the white paper, other than what we just said? I mean, I agree to this. जो अभी तक हमने डिस्कशन किया, अगर हम उसी को समराइज करें, तो पॉलिसी मेकर से जो बात शुरू होती है और फिर उसको आगे लेके चलते हुए कि हमारे पास क्या पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि हमारे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें, और इसी तरीके से आगे जब हम एक्चुअली प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्लाउड की बात की या उसके ऊपर रैंसमवेयर की बात की या साइबर अटैक्स की बात की, उसको सिक्योर करके फाइनली किस तरीके से हम सब अपना जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हैं, while keeping in mind all the like as मरियम said, जो फ्रेमवर्क है आपका, जो स्केलेटन है वो मिसिंग है. हम सब ने भी कहीं ना कहीं डिफरेंट वर्ड्स में ये बात की थी हेल्थ केयर और प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो उन सारी चीजों को सामने रख के किस तरीके से हम इस चीज को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अनदर सजेशन इज like if you talk of the best hospitals or the best practice areas in the world, South Korea का healthcare index 78.7% है अभी भी. आप ऐसी किसी जगह का केस स्टडी उठा सकते हैं और उसके रेफरेंस पे देख सकते हैं कि भाई ये अगर सारी चीजें वहां पे मौजूद हो रही हैं, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जो मिसिंग है, और इसमें से ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि वी कैन डू एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ कोरिया, बट एटलीस्ट अगर उसके पास ये 5, 6, 8, 10 अच्छी चीजें हैं तो सम ऑफ देम कैन डेफिनेटली बी अचीव्ड और कॉपीड इन पाकिस्तान, कंसिडरिंग द लोकल एनवायरनमेंट एंड द रिसोर्सेज इन पाकिस्तान. तो उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो बेहतर है. जी मिनहल, एनी लास्ट पॉइंट फ्रॉम योर साइड? आप म्यूट में, you're mute. Sorry. First of all, I'm very positive how Pakistan has been able to adapt. In fact, first the challenges were that we were not even ready to adapt, that we are, fulfilling enough. But what I have seen is in the past couple of years, there is a very positive approach, especially top to bottom, that they have to advance in terms of technology. Uske liye trainings are in place. Even the doctors who were not even ready to use tablets, I've seen that that advancement is over there. So yes, I'm very positive. I think it's just a collaborative effort which we need at our own capacity. Great, thank you. And Dr. Tazeen, your last input. Thank you, Ali. I think we covered all the points. I'm really glad and that the conversations have started. और बड़ी खुशाइंद बात है कि सब बड़ी openly बात कर रहे हैं, और that's the first step. I think there are great times to come. Collaborative effort है, और I mean ये definitely हमें बहुत काम करना है, मगर अगर आप बाहर देखें ना, I mean बड़ी रोजी पिक्चर लगती है कि जी शायद NHS में तो मैं यहाँ डॉक्टर के पास जाती हूँ और वहां मेरा डेटा आ जाता है. ऐसी कोई बात नहीं है. NHS still now has no centralized data. मैं जितने डॉक्टरों के पास जाती हूँ, अलग अलग डॉक्टरों को शुरू से लेकर आखिर तक हिस्ट्री बताती हूँ. So I mean there are challenges, but tiny steps लेते हैं, हर कोई लेता है. कोविड ने थोड़ा जहाँ इतनी तबाही मचाई, वहां शायद उसका एक जो सिल्वर लाइनिंग वो ये थी कि सबको लग गया कि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे एंड वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. Great. So with that, once again, thank you so much for your time. I think this is a contribution which will go a long way, because this panel discussion, roundtable discussion will be taken forward in the white paper, and we will recognize your efforts, your contribution, and that white paper will be circulated to across all the healthcare leaders in Pakistan and technology leaders. So we have the form available as well. If you have later thoughts, Narmeen can pass you the form as well. Okay, जिसमें अगर आपको उसके बाद भी कोई thoughts हैं, please feel free to fill that. वो भी centralized वो लोग देख रहे हैं. So once again, very happy and very thankful to all of you for your kind time.
All right. Thank you so much, everyone. Thank you, Thank you. Ali. Thank you, Thank Ali. It you was so very much. nice being connected to all of you. It was really nice. Thank you. Same here. Same here. Thank Here, you. Allah Hafiz. everyone. Thank Allah you guys. Hafiz. Thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.